हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स देने वाले हो तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल आपको चाहिए दैट इज आंसर राइटिंग स्किल, बिकॉज 87% ऑफ द टोटल मार्क्स इज डिसाइडेड बाय योर आंसर राइटिंग. सो हाउ टू इंप्रूव दिस आंसर राइटिंग स्किल? सबसे पहली चीज, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. वॉट एवर यू आर रीडिंग, हर एक चीज का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर, only then you will be able to understand the demand of the question. Once you have understood the demand of the question, फिर आपको इसके स्ट्रक्चरिंग के ऊपर आना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में यू कैन स्टार्ट विद फैक्ट, यू कैन स्टार्ट विद डेफिनेशन. इन बॉडी यू हैव टू satisfy the demand of the question, and in conclusion you can give a macro picture of the concept which has been asked in the question. Once you have understood the structuring, you should be making your mains notes in this manner. तो मेरे अगर आप notes देखोगे तो वो माइक्रो नोट्स होंगे. For every part of the syllabus, I would have written what is the introduction I'll write for this part, what are the points I would be covering. I would also have some facts, figures, data, case studies, articles. All these things would be there in my notes, and there would also be some conclusion. So this is how you have to make the note. Once this is done, you need to start answer writing. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना उसमें परफेक्ट होते जाओ. आप पूछोगे सर कौन से क्वेश्चंस हम लिखे? आई वुड सजेस्ट start writing the mains PYQs, because if you write this mains PYQs you will start getting the confidence कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है वो मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं. If you can write those, automatically you are on the right track. Your preparation is absolutely perfect. Once this is done, you need to get your answers evaluated either by your seniors, peers, or some mentors. Whatever the evaluation you get, try to work on the feedback. Keep on improving. Try to write the same questions again and again and see the improvement. एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका एक मॉडल आंसर बनते जाएगा. And that would be like the perfect answer. That would give you an idea how your model answer should look like. So if you follow all the above steps, I am very sure that your answer writing would improve and this would help you to clear UPSC examination. Best of luck. See you soon.